Very good morning to all of you. Today, this is the third episode or third session in which we basically focus on the intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, and the type of the extrinsic semiconductor, which is actually P-type and N-type. So, the class is beginning with the intrinsic semiconductor, or simply called the pure semiconductor. Here, I have shown a crystalline structure of silicon or germanium-like atom because they are tetravalent and their valency is 4. So, according to this diagram, there is four valence electrons with the atom, which is shown in the lattice figure, and these are called the valence electron. And in the figure, in the middle part, if you see that there is a space which is circled over there, and shows that कि यहाँ पे क्या होता है actually if the electron which is the valence electron of an atom gets some energy which is more than the band gap, then it may start moving out from the valence band and move to the conduction part. That is shown here कि how the electrons are jumping from the valence band to the conduction band and become free electron. So for this, we have to apply a sufficient amount of heat energy so that it may cross that barrier, or simply called the band gap, between conduction band and valence band. So at room temperature, a pure semiconductor will have electrons and holes wandering in the random directions. And these electrons and holes are called intrinsic carrier, charge carrier. And such semiconductor are called intrinsic semiconductor. In intrinsic semiconductor, concentration of charges means the concentration of electron and the concentration of the holes. Here, P stands for the concentration of holes. So the concentration of charge carrier, either it is electron or the holes, both are the same in concentration or the quantity. Moving to the next slide. This topic is about extrinsic semiconductor or called impure semiconductor. If we take an impurity and add a pure semiconductor in a very little amount, about a part of the millions, still then it can drastically change the nature of the parent semiconductor. Doping. Doping is a common word which means adding the impurity. Doping is a process of deliberate addition of very small amount of impurity into an intrinsic semiconductor or the pure semiconductor like silicon and germanium. The impurity atoms which are added are called dopant, and there are two types of dopants. These are pentavalent, having 5 valence electron. Examples are there, antimony and arsenic is there, which have 5 valence electrons. That is, they don't have an ability to donate the electrons to the semiconductor. Thus, the semiconductor so produced by donating of the electron from the donor atom is treated as n-type extrinsic semiconductor. Whereas there is another kind in which the donor atom have 3 electrons, 3 valence electron, and now it can take and it can make a pair by taking an electron from the parent semiconductor और इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो आपका पेरेंट्स है उससे ये एक्सेप्ट कर सकता है एंड ड्यूरिंग दैट एक्सेप्शन जब वो अलग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा देन आपका जो पेरेंट्स एटम है जो पेरेंट्स आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ड्यू टू दैट मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द पेरेंट बॉडी वहां पे एक स्पेस क्रिएट होगा विच इज नथिंग बट अ होल स्पेस जो पेरेंट्स है आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है प्योर है क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तो वहां जो स्पेस क्रिएट होगा दैट इज बिहेविंग एज ए होल सो दैट इज कॉल्ड p type extrinsic semiconductor. So there are two type of semiconductors. Extrinsic semiconductor, it is either n type if there is an excess of electron in the donor atom, and if there is deficiency of number of electron in the donor atom then it is called trivalent or p type. So remember that n type means excess of electron with the donor
and p type means deficiency of electron with the donor. So moving to the next part, here we focus basically on the method of the dopings and the n-type semiconductor. So method of doping, doping means adding of impurity. So by heating the crystal in presence of dopant atoms, it can be pentavalent or trivalent. Second method is that adding of impurity atom in the molten state to the semiconductor. It is a like simplest and we can say that it is the मतलब updated method है ये आपके लिए एक तरह से कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी क्रिस्टल्स की जो होती है with respect to atom बहुत अच्छी आती है. Now third one is that bombarding semiconductor with the ions of impurity atom. This is one of them. By bombarding the ions of donor atom to the pure semiconductor. उस केस में भी आपका doping condition हो सकती है. Now we basically focus on n-type semiconductor and p-type semiconductor. That might be asked during this examination. N-type semiconductor means concentration of electrons is higher in the donor atom. So I have taken here a lattice of germanium atom. यहाँ पे हमने जर्मेनियम एक एटम लिया है, उसकी लेटेस्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने दिखा रखी है, जिसमें आपका डोनर जो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो पैकेट सेमीकंडक्टर है वो गैलियम है, सॉरी जर्मेनियम है, एंड आर्सेनिक जो है वो आपका डोनर एटम है जिसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. इफ यू फोकस ऑन द मिडिल ऑफ दैट जो आपको मैट्रिक्स दी गई है, लेटिस आपको जो दिया गया है, उसके मिडिल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको आर्सेनिक एलिमेंट दिया गया है जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, and it is surrounded by the gallium which has 4 electrons only. So this excess of electron have an ability to jump from one band to another band. If we focus on the band diagram, then valence band में आपके electrons हैं and they can jump directly to the conduction band. So there is a band gap of 0.47 electron volt for the case of germanium crystals only, and donor level is shifted to having a width of 0.045 electron volts. Means आपका जो डोनर है उसका जो लेवल है एनर्जी शिफ्टिंग का वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, that is about 0.7 electron volt is total band gap and donor level is from that valence band it is having some energy level जो कि आप निकाल सकते हैं 0.7 में से 0.045 को माइनस करके, that becomes the donor level. तो आप देखिए इतना क्लोज है ये कंडक्शन बैंड के कि इसको थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जंप करके कंडक्शन बैंड में मूव कर सकता है. Here 4 electron of arsenic forms the covalent bond with the 4 germanium atoms and the fifth of the arsenic atom is loosely bounded. Actually fifth of the electron of the arsenic atom is loosely bounded. As the pentavalent impurity increases, the number of free electron is increasing, and therefore these are the donor impurity, and the germanium crystal in n-type extrinsic semiconductor. So it is named as germanium crystal is n-type semiconductor because there is the impurity atom जो है उसके ऐड होने से आपका डोनर लेवल जो है वो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज हो जाता है. एक्चुअली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपका चार्ज किए गए हैं जो कि मूव कर सकते हैं. So it is called n-type semiconductor. Thus, n-type gallium crystals have free electron which are majority carrier, maximum in number, and there is holes which is minority charge carrier, जिनके काउंटिंग बहुत कम आपको मिलेगी. So n-type में क्वेश्चन बन सकता है that is either band structure or might be the question is why it is called n-type semiconductor and what are the like concentration of the majority charge carrier and minority charge carrier. So electron are the majority charge carrier and holes are the minority charge carrier. Now we focus on the p-type semiconductor which is the next part. आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर गोइंग टू p-type n-type semiconductors के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, जैसे कि in a doped or extrinsic semiconductor the number density of electron in the conduction band and number density of the hole in the valence band are not same. You can see from the picture that number of concentration of the electron which is just a donor
is greater than that of the whole. And if we focus on the purest form, pure semiconductor की हम बात करें, तो number of hole and number of electrons are generally same. So the production multiplication of the two is equal to Ni square. अगर हम प्योर एलिमेंट की बात करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो इन दैट केस नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन जो होती है वो सेम होती है. Therefore we can take it as equal to Ni square. But in case of n type, Ne is greater than Nh. Now focus is on p-type semiconductor. Here is again a lattice of gallium, where the central atom is this time not arsenic, it is indium, which is trivalent impurity. By adding this trivalent impurity, there is 3 valence electron, and there is a shortage of 1 more electron. इंडियम में एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होती है. सो टू बैलेंस दैट शॉर्टेज, दैट होल क्रिएशन यहाँ पे जो होता है, नाउ द इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इम्प्योर एटम क्या करेगा, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, तो आप जेलियम से अगर आपको जर्मेनियम से अगर आपको बॉन्डिंग बनानी है तो आपको वहां से एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और ड्यू टू दैट वहां पे एक होल्स भी क्रिएट होगा, बिकॉज देयर इज ए वैकेंसी. अगर वैकेंसी है तो वहां पे कुछ ना कुछ प्लस चार्ज पार्टिकल आप कह सकते हैं, उसके रूप में होल्स की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी. व्हेन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, व्हिच इज अ ग्रुप 4 क्रिस्टल, is doped with a trivalent impurity such as indium, the 3 valence electron of indium forms the 3 covalent bond with 3 germanium atom. You can see from the picture, indium ने आपका up में upward, downward and leftward आपका germanium से crystalline से covalent bond बनाया. With the 4th germanium atom constitute a whole pair. लेकिन 4th वाले के साथ क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बना रहा है. Not with electron, it is actually electron and hole pair. The hole so created may be filled with an electron from the neighboring atom. Now focus on this. यहाँ पे जो होल है उसको अगर हमें फिलअप करना है तो हमें जो नेबरिंग एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन को बोरो करना पड़ेगा, एंड इट विल क्रिएट ए होल टू दी पोजिशन, और जिस जगह से हम इलेक्ट्रॉन को लेंगे वो वहां पे एक होल क्रिएट कर देगा. सो दिस इज देयर. एंड इफ यू फोकस ऑन द बैंड डायग्राम, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैलेंस बैंड भी है, कंडक्शन बैंड भी है. नाउ दिस टाइम द एक्सेप्टर लेवल इज क्लोजर टू वैलेंस बैंड. वहां पे डोनर लेवल था जो कंडक्शन बैंड के क्लोजर था, क्योंकि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा मूव कर गए थे तो आपका कंडक्शन स्टार्ट हो जाता था. यहाँ पे ये चीजों को रिसीव कर रहा है, तो एक्सेप्टर लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के क्लोजर हो जाएगा. तो यहाँ पे भी आपका टोटल बैंड गैप जो है 0.7 का है, और अगर आप एक्सेप्टर का लेवल निकालेंगे तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है. ये विड्थ है इसकी, वो यहाँ पे आपको शो की गई है. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. क्रिएटिंग ए होल टू द पोजीशन, creating a hole to the position from where the electron jump, it creates a p-type of semiconductor called acceptor type semiconductor, or simply called the p-type semiconductor. क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा फ्रॉम दैट जर्मेनियम एटम टू इंडियम एटम, तो वो क्या करेगा, वहां पे एक होल क्रिएट कर देगा. सपोज दिस इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड इट इज मूविंग फ्रॉम जर्मेनियम टू इंडियम, तो इंडियम ने तो रिसीव कर लिया, लेकिन जर्मेनियम में क्या क्रिएट हो गया, एक होल क्रिएट हो गया, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया था. तो देयर इज ए परमानेंट चांसेस ऑफ होल्स क्रिएशन. जितने बार भी वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तब भी वहां पे क्या करेगा, एक पी कंसंट्रेशन डेवलप कर देगा, एंड दिस इज कॉल्ड द पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर. In p-type semiconductor, the concentration of the hole is greater than the concentration of the electron. तो यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है concentration of hole which is equal to now like Na is very much greater than number of concentration of the electron. Now there is difference between intrinsic and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor, the first difference is there, it is pure group 4 element. In extrinsic, it is adding the impurity from the group 3rd and group 5th. If we talk about the group 3rd, trivalent,
Indium is there an example, and it has 4 valence electron. If we talk about the fourth group element, that is pentavalent, then there is example of arsenic, which have 5 valence electron. Second point is there sigma, which is increased with increase in temperature. Sigma increase with increase of temperature, and sigma for the case of extrinsic, sigma is dependent upon amount of the impurity added. Next is there in case of intrinsic, number of hole, number of electrons are equal in concentration, whereas in case of extrinsic there is a two possibility, one with n-type, and n-type have number of charge carrier जो concentration होता है electron की ज़्यादा होती है hole से, and in p-type the concentration of the hole is greater than that of concentration of electron. So with this point I am stopping my video today. Thank you for listening.